Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So finally very important updates coming forward related to Deloitte NLA 2026. So finally new shortlisting mail has been out. जैसा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आप लोग को शॉर्टलिस्टिंग मेल आएगा एंड नाउ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द शॉर्टलिस्टिंग मेल. सो थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग. You have successfully registered for the national level assessment and this platform will enable you to stay further discovery your impact with Deloitte. So these are the details students are getting. First of all, your candidate ID will be there and this will be unique ID. So as a next step we will send you email to choose an assessment date and time slot. Means जस्ट इसके कुछ ही मीन्स 1 और 2 आवर के बाद आप लोग का असेसमेंट स्लॉट बुक करने का एक डेडिकेटेड मेल आएगा एंड जैसे ही आएगा विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टू. सो एज अ नेक्स्ट स्टेप वी विल सेंड यू ईमेल फॉर द चूजिंग ऑफ असेसमेंट डेट एंड टाइम. मीन्स आप खुद से अकॉर्डिंग टू योर फ्री टाइम यू कैन चूज द स्लॉट. सो रिकमेंडेड डिवाइस इज यूज़ अ लैपटॉप डेस्कटॉप डिवाइस, डू नॉट यूज़ मोबाइल डिवाइस. एंड जिन्होंने भी हमारा डिलॉइट PYQ नहीं देखा है मस्ट गो थ्रू दैट बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन क्लियरिंग दिस असेसमेंट. रैम एंड प्रोसेसर मिनिमम 4 GB रैम इज रिक्वायर्ड एंड i3 प्रोसेसर इट शुड बी देयर एंड मेक श्योर दैट यू शुड हैव स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज अगर आप एक बार डिस्कनेक्ट हो गए देन it will be very difficult to reschedule that all the test. So be careful and now keep your eye on mail because you will get the next mail soon. Now talking about the important things that lots of candidate was asking that what if I am not getting the mail. So if you have not get the mail then wait and hope for the best. I hope that you will receive. जिन्होंने भी हमारे मीन्स रेज्यूमे फॉर्मेट को फॉलो किया था उनको मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर गेटिंग द मेल. सो अगर आपने रेज्यूमे अच्छे से बनाया देन यू विल श्योर शॉट गेट द मेल and they will release the test link in various phases, so no need to worry about that. Okay, so make sure to do the camera test as well as microphone check for the successful assessment. So these are the complete detail I want to tell you. and जिनका भी TCS का या फर्दर कोई भी मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं you can fill our form, that will be really helpful for you in clearing this assessment. So best of luck to all the candidates who gonna participate in this test and I hope that you will get important job in this year. So कोई भी query feel free to ask here and again saying if you haven't get mail be positive, you will receive mail soon. If you have follow our video and if you have make the resume in good way then you will get the mail. Okay, so what are the important tips I want to tell? First of all, I will pin both video that is the aptitude and coding video. Must go through that because that will help you to clear the assessment. And in assessment don't use ChatGPT or any AI because you will directly disqualified. So be careful, otherwise there will be mass rejection. Okay, so be careful and take this opportunity in good way and make sure to refactor all the code if you are doing copy and paste of the some code because coding का level ज़्यादा कुछ hard नहीं रहेगा. Just go to our video, there I am talk in detail about the preparation strategy, about the coding pattern, test pattern. So must go through that, that will be really helpful for you. If you have any query feel free to ask here, I will feel very happy to help you. Till then bye bye, meet you in the next video. So मिलते हैं next important updates में. Thank you.